एनईपी क्या है बताओ। सर एनईपी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है जिसके थोड़ा जोर से बातें नहीं करेंगे वहाँ से। यस, एनईपी इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनईपी 2020 की बात की जाए तो उसमें डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल की बात है। चलो आप बताओ। सर इसमें लैंग्वेज एजुकेशन पे एम्फोसिस किया है। लैंग्वेज के ऊपर फोकस है। सर इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे मैंने कहा ना, एक एक पॉइंट बताने मुझे। सर इसमें 5+3+5 5 3 3 4 यस। 3 लैंग्वेज फार्मूला 3 लैंग्वेज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला यस। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी आप बताइए जी। सर इसमें इंक्लूसिव लर्निंग इंक्लूसिव लर्निंग यस। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंशियल आप बताइए। इंटीग्रेट करके पढ़ाना। इंटीग्रेशन ऑफ द लैंग्वेज यस। डाइवर्सिटी डाइवर्सिफिकेशन है इसमें आप बताइए। कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ कंस्ट्रक्टिविज्म आप बताइए। मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी सर स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो लैंग्वेज बैरियर है उसको हटाना। बैरियर्स को हटाना है यस। लर्निंग विदाउट बर्डन लर्निंग विदाउट बर्डन यस। जॉयफुल और प्लेफुल लर्निंग जॉयफुल एंड प्लेफुल लर्निंग। 3 लैंग्वेज आना चाहिए। 3 लैंग्वेज। चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड सेंट्रिक। रीजनल लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेज के ऊपर फोकस है यस गर्ल। लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग यस। हैंड्स ऑन लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग आप पे आते हैं। हाँ बताइए। रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना रियल वर्ल्ड कनेक्टिंग द लर्निंग विद द रियल वर्ल्ड। यू बॉय इंक्लूसिव नो टॉकिंग प्लीज लिसन टू हिम प्लीज यस। सर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड लर्निंग यस। इंक्लूसिव लर्निंग इंक्लूसिव एंड व्हाट डू यू से आप क्या रहेंगे। हाँ क्रिएटिविटी पे फोकस है यस। स्टूडेंट सेंटर स्टूडेंट सेंटर्ड टू ब्रिंग द चेंज इन सिस्टम। टू ब्रिंग द चेंज चेंज ओके चेंज इसमें है यस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यस। कोई बेस्ट पेडागोजी पेडागोजी के ऊपर बात की गई यस। लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग होलिस्टिक डेवलपमेंट holistic learning. If any country has to develop, then there is only one thing, and that is the education. No money, no resources, no materials, okay? No defense forces, only the education. That is the cornerstone of the development of a society or a country. Draft NEP was just submitted on 31st May 2019. First year was the draft. And in that draft, different type of suggestions were asked. Okay, the draft was made and it was sent to the people. So the student, teachers, parents, they gave their inputs. Okay, and then finally, as the girl was saying, that NEP was launched on 29 July 2020, and it is a milestone in country's educational landscape. Very, very important document, very, very important event in country's educational landscape. Why? We will discuss later on. It focuses on access, equity, quality to meet the demands of 21st century. There are 2 more things that will be coming in the next slide, but these are the main things: access, then equity and quality. We will discuss these things later on. NEP 2020 replaces National Policy on Education, as the girl was saying. Why I discuss that thing with you? Because many things you gave, these are the part of National Education Policy, and you were doing really excellent thing. So this replaced that National Policy on Education 1986, and that policy was modified in 1992 also. Okay, but it is 2025. Now we are in 21st century, so we require some changes. Now this policy addresses the evolving changes and demands of modern era. If we are doing anything, then we need to update. Suppose you have your mobile phone, you do that updation after every month or every 15 days, 20 days. Because updation is important. Why? Because the changes are taking place. What you are today, what you are putting on today, what you are eating today may not be possible, that may not be available tomorrow. You may change that. You may require some different type of diet. So change is very important, and that's why we require this. It is an extensive, consultative, inclusive and research-based policy. Now see, these words, extensive, it covers all the things. Number one. Consultative, it was consultative because many people were asked. Scientists were asked, parents were asked, children were asked, then officers were asked, then education department people were asked. So lot of consultation went on. Inclusive, as the girl was saying, inclusive.
it includes everything. Everything comes in that. Nothing is excluded. And it is the important thing, it is research based. ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया, कुछ एक कमेटी बनी और उन्होंने एक डिजाइन कर लिया और हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिया. Not like that. It is research based. If anybody comes from outside and goes outside, then he or she will shut the door back. So it is a research based policy. So this thing we are going to do later on also. And now there are the 5 pillars as I was saying.